Hi friends, now we are discussing the interview questions on a threading in a Java. So guys, we have a question. Explain the life cycle of a thread in a Java. So friends, following diagram explain the thread life cycle. Following diagram explain the thread life cycle. Okay. अभी हम एक डायग्राम निकालते हैं कि जो पूरी डायग्राम हमें एक्सप्लेन करेगी थ्रेड का वर्किंग कैसे होगा. ओके ओके just wait. Consider we have one Java program here. And here is we have a thread scheduler. Here is we have a thread scheduler. First here we have a new thread. Then start thread. Right, we have first of a new thread, then start thread. Then next in thread scheduler it is a runnable. It is a runnable state. Second we have here just wait. Here we have runnable state. Right, then we have a runnable state. After that we have a then we have a running state. Then we have a one more state is a dead. And from running we have also more two state is there, blocked and waiting state. Waiting, and again we have one more state is runnable state. Okay, this is the life cycle of a thread in a Java. So guys, we want to discuss step by step complete life cycle of a Java thread. Okay, so first we'll discuss a new thread. First step, new thread means when we create the object of a thread class by using a new keyword or a new operator. When we create the object of a thread class by using a new keyword or new operator called as a new thread in Java. In this situation, thread is not live but internally created in a program. Example, suppose I have a class A extends a thread. If I write here A of A1 equal to new of A, so we can see it is a new thread state. ये स्टेप हो गई है. मतलब इसका ये हुआ कि जैसे भी आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया तो आपका थ्रेड नए से क्रिएट हुआ. ओके, क्लियर. सेकेंड स्टेज, start and runnable state. What is this? When we call start method, then thread execution start and change its state to runnable. Change state to the runnable.
थ्रेड एग्जीक्यूशन स्टार्ट एंड चेंजेस स्टेट टू दी रनेबल। ओके, मतलब आपके थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया और उसकी जो भी स्टेट है ये रनेबल बोल के क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई। ओके, इन दिस केस कंट्रोल हैंड ओवर टू थ्रेड शेड्यूलर for execution of a thread for execution of a thread and finishes task, finish its task। मतलब जब भी हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं तो थ्रेड स्टार्ट होके वो इंटरनली रन मेथड को कॉल करता है, तो रनेबल स्टेट क्या होती है, वर्किंग में रहती है। तो ये जो एग्जीक्यूशन है ये थ्रेड शेड्यूलर के पास चला जाता है। मतलब ये हुआ ना कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ऐसे लिखा क्लास ये एक एग्जांपल के तौर पे extends a thread, class ये extend a thread, then I can write here public void run, public void run, and I am writing here thread logics, thread logics here। जैसे हमने लिखा of a1 equal to new of a, when I write a1 dot start, when I write a1 dot start, तो इसका मतलब ये था ये आपका न्यू थ्रेड है, और जैसे आपने ये वन डॉट स्टार्ट किया वैसे ही आपकी रन मेथड कॉल हो गई। तो ये जो भी स्टेट है ना, ये जो यहां से आपका ये थ्रेड स्टार्टिंग हो गया, और जैसे ये कॉल हो जाता है ना इसे रनेबल कहते हैं, रनेबल स्टेट मतलब ये रनेबल है, राइट। तो ये आपकी रनेबल स्टेट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ओके ओके, नेक्स्ट रनिंग स्टेट क्या होती है, रनिंग स्टेट we can say running state means when thread scheduler access the one thread from a thread pool from a runnable state to runnable state for execution purpose to running state, for execution purpose to running state। Running state means thread can execute its logics in a background called as the running state of a thread। मतलब यहां पे अगर आप आते हैं रन मेथड के अंदर का लॉजिक अगर कोई रन हो रहा है तो रनिंग स्टेट है, वो क्या है, रनिंग स्टेट है। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज अ ब्लॉक्ड और वेटिंग स्टेट। व्हाट इज द ब्लॉक्ड और वेटिंग स्टेट, वी कैन से व्हेन थ्रेड इज वेटिंग फॉर another thread for its execution। Example, when we use the join method, then another thread is waiting for, right, when we use the join method the other thread is waiting for, right, close the running thread or complete its working, another waiting for, right, another thread is waiting for complete its working of a previous threads, ये एक हो गया। या if we use the unconditional wait, then thread thread is in waiting process and okay request for re-execution using a notify or a notify all methods, राइट। तो ये जो भी स्टेट होती है ये ब्लॉकिंग और वेटिंग स्टेट होती है। when we call thread for re-execution purpose called as waiting to runnable state, when you call the thread for re-execution purpose called as waiting to runnable state,
दिस इज द वेरी मोर इम्पोर्टेंट पार्ट हियर. मतलब ये जो प्रोसेस है ये आपकी ब्लॉक्ड और वेटिंग स्टेट है. क्लियर? ओके. And last state is a dead state. When thread execution stop, then it will change its when thread execution stop, it will change its state from running to dead. Or when we call stop method manually, then thread is a dead, means not live. Means not live. These are the some important steps of these are the some important life cycle steps in a threadings. Okay, thank you.